Hello students, in our last class we have discussed about the electrochemical series and its importance for the reduction and the oxidation reactions. Then we have also discussed about the Faraday's law, which is very important for the electrolysis, and the two laws were there in case of the Faraday's law, and from these laws we have constituted a mathematical expression, that is W is equal to ETC by F. Okay. So I had already said that we can remember the Faraday's law of electrolysis by saying that W is equal to etc. by F. Now first of all, in this class I will start with a mathematical, means numerical problem on Faraday's law. See the question. A solution of copper sulfate, is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? So we know that W is equal to ETC by F, where E is the equivalent weight, T is the time, C is the current, and F is the Faraday. So the T, that is 10 minutes, that is 600 seconds, and the charge, that is Q, that is actually CT, and 1.5 ampere, that is the current, and T, that is the time, that is 600 seconds. So if I will multiply these two, then we will get the charge, that is 900 coulomb. And for the deposition of the copper, we can say the reaction in the cathode, that is copper 2 plus aqueous plus 2 electron, that is the copper solvent. So that copper actually deposited on cathode, if I will do the electrolysis on a solution of copper sulfate. So we require the 2 Faraday because the 2 electrons are there. So due to the 2 electrons, we can say that we require 2 Faraday or 2 into 96500 coulomb to deposit the 1 mole or 63 gram of the copper. Actually we can write also that 63.5. That would be very accurate than 63 gram of copper. I have written here. So for 900 coulomb, the mass of copper deposited, that is 63 gram per mole into 900 coulomb divided by 2 into 964.7 coulomb per mole. So that is actually W is equal to ETC by F. Why? Because we know that that actually E is the equivalent weight. So what is the equivalent weight? Equivalent weight is equal to A by V, means atomic weight divided by the valency. So atomic weight of the copper, that is 63 here, and divided by V, that is the valency. In case of copper, 2 plus obviously 2, so the valency is 2, so the equivalent weight is 63 by 2. You can write here that is the value of E, that is 63 by 2, and then ETC means T into C. I have already calculated the value, that is Q is equal to CT or PC, that is 900 coulomb. So that's why you have to multiply this one, that is 63 by 2 into 900 coulomb and divided by Faraday, that is 9647 coulomb per mole. So that is actually the W is equal to ETC by F, and it will be 0.2928 grams. So that much amount of copper will be deposited if I will do the electrolysis on a solution of copper sulfate for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Okay. So in this way we can solve any type of the problem of the Faraday's law. So after that, so this is actually your one portion in our electrochemistry chapter, and another portion of our electrochemistry chapter, that is the conductance of the electrolytic solutions. So that is another part, that is the conductance. The main theme of the next part, that is the conductance.
So I think everybody knows about the first reaction, that is R is proportional to L by A. In our physics portion, I think you have well known about this reaction, that is R is proportional to L by A, where R is the resistance, L is the length, and A is the area of cross section. So the proportionality constant, that is actually rho here. So R is equal to rho into L by A, where rho is the resistivity or the specific resistance. Okay. So we know the unit of the resistance, that is our ohm, and we also know the unit of L, that is length, so obviously that is centimeter or meter, and the area of the cross section, that is A, that is actually centimeter square or meter square. So when I am writing that R is equal to rho into L by A, so the rho is the resistivity or specific resistance, which is actually the proportionality constant for this particular reaction. So R is equal to rho into L by A in this reaction, I mean in this expression, mathematical expression, the unit of rho, that is ohm meter. That is very easy. You can write that rho, what is the value of the rho? Rho is equal to RA by L. So R is ohm and A is centimeter square or meter square divided by L, that is centimeter. So it will give ohm meter. Okay. So the unit of the specific resistance here, or the resistivity, that is ohm meter. So I have written here ohm meter. Next, the inverse of the resistance, that is actually called the conductance. What is conductance? Conductance is the inverse of the resistance. Okay. So if I will just write the mathematical expression, that is R is equal to rho into L by A, in just reverse matter, then we will get 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. Okay. If I will write that expression, that is R is equal to rho into L by A, in its reverse order, then we will get 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. And here 1 by R, that is actually our G, that is our conductance. Okay. So G is equal to 1 by rho into A by L, and that 1 by rho, that we can also express in terms of the kappa. Okay, that 1 by rho, that actually we can write in our expression as kappa. So the total mathematical expression we can write, that is G is equal to kappa into A by L. Okay, so what is G? G is the inverse of the resistance, so it is called conductance. Okay, it is called conductance. And 1 by rho, that is actually kappa, so that is actually the inverse of the resistivity or the inverse of the specific resistance, and obviously that should be called, that is specific conductance or conductivity. Okay, so that is known as kappa or specific conductance or conductivity. So the main expression, the main mathematical expression is there. I have written here, that is G is equal to kappa into A by L, where G is the conductance, kappa is the specific conductance or conductivity. Now we have to write what are the units of G and kappa. In case of G, the unit, obviously there is inverse of resistance, that means ohm inverse, or we can write that one as Siemens. Okay, we can write also like Siemens or Siemens. So Siemens or Siemens, that should be written as S, capital S, that is the SI unit of the conductance. So what is the SI unit of the conductance? That is our Siemens or ohm inverse. Okay, so Siemens is the SI unit, ohm inverse, that is our CGS unit. So what is the unit of the kappa? That is, what is the unit of the specific conductance or conductivity? So we just put the value of G, we just put the value of A and L, we can get the unit of the kappa, and unit of the kappa, that is our Siemens meter inverse. Okay,
So Siemens meter inverse, that is actually the SI unit of the conductivity. So here I have said very important two things, that is conductance and the conductivity. Conductance, that is G, conductivity, that is kappa. The unit of G, that is Siemens in SI, and unit of the kappa or the conductivity, that is Siemens meters inverse. So finally we can write that the conductance, that is G, is equal to specific conductance divided by the cell constant. Okay, finally we can write this as, because we know that the cell constant, that is actually L by A. What is the cell constant? Cell constant is the value of L by A, means length divided by the area of the cross section of a particular electrical wire, okay, or the cell. Okay, so the conductance, that is actually the specific conductance divided by the cell constant. So what is the cell constant? The cell constant is the L by A. So obviously the unit of the cell constant, that should be meter inverse in SI. Okay. Next, I am just going to this portion, that is what is conductors, what is insulators, what is semiconductor, and what is superconductor. So first of all, what is conductor? कंडक्टर हम लोग किसको बोले? कंडक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जिसका लार्ज कंडक्टिविटी है, जिसका कंडक्टिविटी लार्ज है, ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी लार्ज होगा उसको ही हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, मतलब जिसका कप्पा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे, लाइक मेटल्स एंड एलॉयज, non-metals like carbon black, graphite, organic polymers like polyaniline, polypyrrole and polythiophene. These are the example of the conductors, that is they are suitable for carrying the electricity. Okay, so this is conductors. So conductors have very high or large value of conductivity or very large value of kappa. Next, what is insulators? Insulators, obviously all of you know about the insulator. Means insulator क्या बोलते हैं हम लोग, जिसके अंदर से करंट पास ठीक से नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा, उसका कंडक्टिविटी और कप्पा जो हम लोग बोल रहे थे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हम लोग बोल रहे थे, उस कप्पा का वैल्यू बहुत लो होगा, तो उसको हम लोग मेनली इंसुलेटर्स बोलेंगे. व्हाट आर द एग्जांपल्स? ग्लास, ceramics are the examples of the insulators. Everybody we know that the insulator, glass is actually insulator. Okay. Next, semiconductor. We know about N-type and P-type semiconductor in solid state. And here also, if I will give the definition of semiconductor by using the kappa or specific conductance, then we can say that the conductivity or the value of the kappa, that is in between the conductors and insulator, that is the semiconductor. The example is silicon, doped silicon, gallium arsenide. These are the example of the semiconductor. And what are the superconductors? Superconductors हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और कप्पा जो है उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, मतलब वेरी हाई, उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज 0 to 15 Kelvin, not degree centigrade, 0 to 15 Kelvin, that is very low temperature, and in that temperature the conductors are actually behave like superconductors. And other examples are also there, like lanthanum based, cuprate, perovskite material. These are also the examples of the superconductors. So here I had said about the different type of the elements like conductors, insulators, semiconductor and the superconductor, and I had given the definition by using the value of the specific conductance और द कंडक्टिविटी और द कप्पा. अगर ज़्यादा है तो उसको कंडक्टर, अगर ज़्यादा मतलब बहुत इनफाइनाइट ज़्यादा है तो उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलेंगे. अगर एकदम नहीं है, कंडक्टिविटी बहुत लो है तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे. और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में अगर कप्पा का वैल्यू है तो उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज द मेटेलिक और द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस. What is the metallic or the electrical conductance?
the electrical conductance through metals due to movement of electrons. We know about this, that the electrical conductance through metals that actually happen due to the movement of the electrons, and depends on nature and structure of the metal, number of valence electron per atom, and the temperature. What is the effect of temperature on metallic or electronic conductor? That is, if I decrease the temperature of the metallic or electronic conductor, then if I will increase the temperature, then the इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वैल्यू जो होगा वो लो हो जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली हाई होगा। तो इसलिए हम लोग मेटल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट और एक चीज़ है जिसको हम लोग आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। व्हाट इज द आयनिक कंडक्टेंस? आयनिक कंडक्टेंस जो है दैट इज द प्योर वाटर, ओके, हैज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर जो है उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो डिप्लीट करके H प्लस और OH माइनस आयंस बनाता है और उसका ऑब्वियसली कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻⁷ में, विच लीड टू लो कंडक्टिविटी। उसका वैल्यू जो है कंडक्टिविटी बहुत लो है, 3.5 × 10⁻⁵, ओके, सीमेंस मीटर में। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व इन वाटर, अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सपोज NaCl या जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग डाल दिए वाटर में, देन कंडक्टिविटी इंक्रीज। हम लोग ये जानते ही, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक और द आयनिक कंडक्टेंस, ओके। सो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस present in solution is called the electrolytic or ionic conductance. It depends on mainly 5 factors are there. First of all, the nature of the electrolytic added, the nature of electrolyte added. Next, the size of ions produced and their solvation. Next is the nature of solvent and its viscosity. Next is the concentration of electrolyte, and last that is temperature. If I will increase the temperature, the ionic conductance value that also increase. Okay. So that is all about the ionic conductance. So 5 main factors are there in case of ionic conductance. That is, first one is the nature of the electrolyte added. Second is the size of the ions produced and the solvation. Next is the nature of the solvent and its viscosity. Next is the concentration of the electrolyte, and last is the temperature. Next, I will discuss how can we measure the conductivity in case of the ionic solution. How can we measure the conductivity of the ionic solution? So, suppose we have unknown resistance, then we can measure the unknown resistance by using the Wheatstone bridge. Okay, we know about the Wheatstone bridge, the 4 type of the resistance, R1, R2, R3, R4 were there. So if we don't know the resistance, then we can measure it by using the Wheatstone bridge. But to measure it in ionic solution, 2 problem occurs. तो जो अननोन अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग Wheatstone bridge यूज करते हैं। बट अगर हम लोग ये आयनिक सोल्यूशन के केस में यूज़ करेंगे इस Wheatstone ब्रिज को, तो इसमें मेनली 2 प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज द पासिंग द डायरेक्ट करंट, दैट इज DC चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। क्योंकि Wheatstone ब्रिज हम लोग DC यूज़ करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्या है, द सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक मेटेलिक वेयर, क्योंकि सोल्यूशन में हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि उसमें कोई मेटेलिक वेयर हम लोग ऐड कर दिए, उसके अंदर डिप कर दिए तो हम लोग उसका हम लोग रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो ये सॉलिड के लिए संभव है, सोल्यूशन के लिए संभव नहीं है। तो ये मेन 2 प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई आयनिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो इसमें मेन ये 2 प्रॉब्लम है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो उससे मैं कंडक्टेंस निकाल सकता हूँ, और उसका अगर पर्टिकुलर एल और ए का वैल्यू मुझे पता है तो मैं कंडक्टिविटी भी निकाल सकता हूँ। बट Wheatstone ब्रिज मैं इसमें यूज़ नहीं कर सकता हूँ मेनली ये 2 प्रॉब्लम के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है DC करंट हम लोग उसमें नहीं दे सकते क्योंकि उसमें
कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। और सेकेंड क्या है कि सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक द मेटेलिक वेट। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एसी करंट। हम लोग अगर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट सेकेंड प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल containing the platinized platinum electron। बट सेकेंड जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो हम लोग एसी करंट देंगे तो उसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम था कि कोई हम लोग वायर को डिप कर दे और उसको हम लोग मेजर कर दिए, संभव तो नहीं हो रहा था। उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल। एक होता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे सेल होता है, ऐसे कंडक्टिविटी सेल होता है जिसमें प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहता है और उससे हम लोग कोई भी अननोन आयनिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी इजीली मेजर कर सकते हैं। इसीलिए उस सेल को हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग मेनली लिखते हैं दैट इज लैम्डा एम एंड दैट लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी। What is the lambda m? Lambda m is the molar conductivity, इसलिए मैं m word यूज कर रहा हूँ and that is equal to kappa by c। So kappa is the conductivity and c is the concentration। तो conductivity और concentration को divide करेंगे then we will get the molar conductivity। conductivity का यूनिट हम लोग जानते हैं साइमन्स मीटर इनवर्स एंड concentration का क्या है? मोल पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी का? इट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, again we also know that 1 mole per meter cube, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हम लोग यहाँ पर 1 मोल पर मीटर क्यूब जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1000 लीटर पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द मोलरिटी। ठीक है, इसके यूनिट को जस्ट तुम लोग ध्यान में दो, तो यूनिट अगर तुम ध्यान में दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसको 1000 लीटर पर मीटर क्यूब कर दिया और मोलरिटी यूनिट हम लोग जानते हैं मोल पर लीटर, तो इसको अगर तुम करोगे तो तुम देखोगे मोल पर मीटर क्यूब तुम्हारा आ रहा है। ठीक, तो लैम्डा एम जो था जिसका यूनिट मैं बोल रहा था साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के टर्म में मैं लिखूँ तो जस्ट ये जो मेरा पोर्शन था ये पोर्शन मेरा चेंज हो रहा है। कप्पा तो मेरा फिक्स है बट ये जो पोर्शन था ये मेरा चेंज हो रहा है। मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर की जगह पर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। तो लैम्डा एम जो है ये अल्टीमेट क्या आ गया? दैट इज अगर मैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखूँ तो ये आएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई द मोलरिटी। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं दैट इज लैम्डा एम जो है दैट इज 1000 कप्पा बाई मोलरिटी। ओके, तो ये जो 1000 कप्पा बाई जो मोलरिटी हो रहा है इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो लैम्डा एम जो हो रहा है इसको हम लोग क्या ऐसे लिख रहे हैं दैट इज 1000 कप्पा बाई सी। बट सी जब मोलरिटी होगा तो उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे और ये सी जब नॉर्मलिटी हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन इसको देखो ठीक से, अगर सी अगर मेरा नॉर्मलिटी हो गया तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए मैं मोलरिटी लिखूंगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है उसके लिए मुझे नॉर्मलिटी लिखना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज 1000 कप्पा बाई एम। इसको हम लोग 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। ओके, सो दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो आज के लिए मैं इतना ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी चीज़ को डिस्कस कर दूँगा। तो आज मैं जो चीज़ एक्सप्लेन की मैं और एक बार तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ और एक बार देख लो। फर्स्ट मैं फैराडेज लॉ का एक एप्लीकेशन दिखाया। नेक्स्ट व्हाट इज द कंडक्टेंस मैंने बताया, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और उसका यूनिट्स क्या होगा ये भी मैं डिस्कस किया हूँ। देन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया हूँ। देन मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं डिस्कस किया हूँ। देन आयनिक कंडक्टेंस क्या है ये भी डिस्कस किया हूँ। और कोई भी आयनिक का अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो उसका कंडक्टिविटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं, उसमें हम लोग क्रिस्टन को न्यू यूज करेंगे, उसमें हम लोगों को कंडक्टिविटी से यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया। मोलर कंडक्टिविटी दैट एक्चुअली 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई एम
और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज एक्चुअली 1000 kappa by n। तो n हो गया मोलरिटी और n हो गया मोल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।